Good evening, Jatin. Please turn on your camera. Good to see that you are on time. So you are doing what? One second. One second. Am I audible to you? Jatin, please turn on your mic. Am I audible now? Yes, yes. Yes. Ma'am, I'm doing my stationery and gift item business. Okay, okay. And what about your school background? Yes, ma'am. What about your school background? Ma'am, I'm graduated. I'm done BA, and now I am a volunteer at Rajiv Gandhi Cancer Hospital. Okay, okay. That's good to hear that. Thank you, ma'am. So, waiting for the other participants to join the meeting on time. Okay. Okay. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. How are you? Fine, sir. How are you, sir? I am very well, Jatin. And good to see you. And you are doing commendable work. Many congratulations. Thank you, sir. Thank you. Ritika, have you sent invitation Mumbai and Bangalore? Yes, sir. Perfect. Good. Thank you. Oh, Jatin, how is everything? I mean, I know we were connected on WhatsApp and we have been communicating for quite some time. Yes, sir. Ritika, I will be back in 5 minutes. Let me just send reminder to Nishant Doshi.
because I was given to join at 5:30. So let me just remind him. Okay, sir. Okay, sir.
Good evening, sir. Very good evening. કેમ છો નિશાંતભાઈ મજામાં? તમારો અવાજ મ્યુટ છે મ્યુટ. તમારો અવાજ અનમ્યુટ કરો. હવે આવે છે અવાજ. સોમવાર એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ. તમને જોઈને આનંદ થઈ ગયો. મને હવે એકાદ વખત તમને હવે પિક્ચરમાં બોલીવુડ કે હોલીવુડમાં તમને પિક્ચરમાં ઉતારવા પડશે. તમારી દાઢી બડી મસ્ત લાગે છે. Jatin is Nishant by he underwent surgery few months back. I mean, he's having the same problem which I had 27 years ago. So that's like that. And she's Ankita, Nishant bhai's wife. Hello, sir. Uh, Hello. uh, is Jatin Goel is from Rajasthan, Manamala. Jatin, you are from Rajasthan, Kota, isn't it? You are not Sir, on actually, I'm from Rajasthan. Rajasthan. nights. Hello. Sir, am I audible? Yes, sir. Yes, Sir, actually, when I was young, I was in Rajasthan, but now after my when I got cancer, then we moved to Delhi. nice. By the way, Mr. Jatin, So uh, my treatment took place in Rajiv Gandhi Rohini when I was 4 years old. okay, okay. अभी अभी आप ना थोड़ा वेट करो. हम जब सेशन चालू करेंगे तब आप ना सब कुछ बताना. और आपको Okay, इंग्लिश में okay, बोलना है या हिंदी में बोलना है, सब चलेगा. ठीक है ना? कोई कोई टेंशन okay, मत करना. okay, okay, sir, okay. या નિશાંત ભાઈ, તમે કયો ઇન્ડિયન ઇન્ડિયન ડિવાઇસ વાપરો છો કે અમેરિકન? ઇન્ડિયન. સરસ. અવાજ સારો આવે છે. સારો આવે છે અવાજ. પણ મને ખૂબ આનંદ થયો કે તમે જોઈન થયા. મને એમ હતું કે તમારા વાઈફ કરશે, પણ આઈ એમ સો ગ્લેડ કે યુ જોઈન. હવે છે, હવે બરાબર વાત કરી શકાય એનાથી. એટલે બહુ સરસ વાત કરું. બહુ સરસ. અને પછી નિશાંતભાઈ એવું ના થાય કે 2 વર્ષ પછી મારો મારો વારો જતો રહે ને તમે મારી જગ્યા લઈ લો. ના ના સર, તમે તમારી જગ્યાએ બરાબર છો. તમે તમારી જગ્યાએ બરાબર છો સર. તમે ખૂબ મહેનત કરી છે. આટલા વર્ષો સવાલ કર્યું છે. તમારે રેડિયો થેરાપી ચાલુ છે તમારે કે રેડિયો થેરાપી નથી લેવાની? કીમો રેડિયો ના કઈ નહીં. ફર્સ્ટ ક્લાસ. બહુ સરસ. અને ક્યારે ફોલોઅપ માટે જવાનું છે હવે? હું હમણાં મંડે જઈને આવ્યો. મંડે ઉર્વીબેનને મળીને આવ્યો. સરસ સરસ. બધું બરાબર છે. ફર્સ્ટ ક્લાસ. હવે હવે જાવ ત્યારે મારી યાદ આપજો. ચોક્કસ. Exactly, Pemina, Ritika, whatever about the remaining person. Okay, sir.
wondering. So can you please repeat what you said? What happened about the third survivor? He was rejoined at 4:30. Yes, he's coming. Actually, I'm messaging him and he's coming. Uh, Jatin and Nishan bhai, you guys can talk for between 8 or 10 minutes. अच्छा તમે તમે 8 થી 10 મિનિટ વાત કરી શકો પછી we'll start Q&A બરાબર. Okay. Hello. We will start live streaming at 6. So live streaming ચાલુ કરશું અને I mean Hello, first sir. was Jatin will speak, then Nishan you will be speaking, and then the third participant. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, Jyota ji. Good ये evening. आपके आपके पीछे वाली फ्रेम देख के मुझे आपके घर पे आने का याद आ गया. क्या कह रहे? Sorry, I didn't catch it. मैंने बोला आपके पीछे वाली फ्रेम देख के मुझे याद आ गया कि मैं आपके घर पे आया था, मजा आ गया था. हाँ, आपने वो पेंटिंग देखा ही है. जी जी एकदम. Jyotaji, we have now Jatin Goel is a survivor. I mean, originally from Rajasthan, and now he's in Delhi and running a provision store. So he's a survivor. Then we have another gentleman, Nishant. Nishant Doshi. Is from Ahmedabad. I mean, and he has undergone same treatment like me. Hmm. And Hello, ma'am. Hello. Nice to meet you. Same to you. And who is the pretty girl next to you? She's my wife. Ma'am, हेलो मैम गुड इवनिंग good evening. और Uh, इसके साथ कौन? इनका नाम अंकिता है, अंकिता and Nishant Doshi. So
and she's your Sanjay chairperson of Indian Cancer Society, Delhi, and she's my inspiration. Ah, I think this is a mutual admiration society, so don't let's worry about it. I know, I know. You were expecting one more person, Shreni? Yes, actually, I mean, Ritika is trying to coordinate somehow. That fellow is not picking up the phone. Oh, So, but in any case, we'll start right at 6. sure, sure. And Chutaji, with your permission, I would like to reveal not one but two milestones of ICS Delhi as soon as we start the session at 6. Okay. Okay. You will surprise me also. Is I that have to, baby in the background? yes, the daughter, she's in the background, I suppose. Yeah, yeah. Is Priya Parmar is back to the office. I mean, she was to return to Delhi on day before, I guess, now yesterday. From where? Priya Parmar. Oh, Yeah, she's back. She's back. She oh came nice. from Assam on, I think, Tuesday. Central. Yeah, I mean, I was in Mm, touch with her. mm. I sent her a text that we please be on the group photo. Yes, yes, she should have been there. We'll forgive Uh, him. yeah. Chotaji, Ritika ka message hai ki that other fellow is having some issue with the network and he cannot join. So we'll start session right at 6. Sure, sure. નિશાંતભાઈ તમારા કોન્ટેક્ટમાં કોઈને જોઈન થવું હોય તો તમે લોકોને ઝૂમ લિંક અને પાસવર્ડ મોકલી શકો છો. They can join the session. This is free joining. And Jatinbhai, you can also send message to your group, Yes. to your contacts, if they want to join the session. Yes. Sure, sir. Sure, sir. Okay, sir. Chotaji, I have one suggestion. I don't know when, but I mean, we have invited survivors, but in the next month, I would like to invite some individuals from FDP to share their experience. I can't promise that, Shrenik Bhai, because Vimal Rar, who's our technical expert, has just lost her mother. So we contact the FDP participants through her.
through her Vidyavani Foundation. So Right. she should be back with us next week sometime. So when she comes, I'll talk to her. Yeah. What I'm trying to tell you is, I would like those individuals to share their experience of practice with running. So it's going to be a different kind of session. No oncologists, no survivors, but other individuals. Sure. I can always speak to her next week when she Yeah. returns. Nitika, I wanted to start live streaming on YouTube. Okay, sir. આપણે નિશાંતભાઈ જ્યારે સેશન ચાલુ થાય અને તમારે બોલવાનું આવે ને ત્યારે તમે અનમ્યુટ કરજો એટલે શું કે સેશનમાં છે ને રેકોર્ડિંગ થાય છે ને તો બધાને અગવડ ના પડે. ઓકે, બરાબર. जतिन जी, आपका कौन सा कैंसर था? मैम मेरा ALL था मैम, ब्लड कैंसर. Okay, good. So we have 2 cancers here today. Right. Yodaji, the third participant is joining in another 10 minutes. Take care. Let's get started. He'll join when he can. Yeah. Nitika, let's start the session. It 6 now. Yeah. Okay, sir. So good evening, ladies and gentlemen, and with the kind permission, good evening, with the kind permission of our chairperson, excuse me, निशांत भाई एडजस्ट थे. आप दोनों जन आपका माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए प्लीज. Okay, sir. Yeah. So thank you. Thank you everyone for joining. With the kind permission of our chairperson, Mrs. Joshua Kovici, I would like to reveal two different milestones we have achieved at ICS, that is Indian Cancer Society, and the first and foremost is today is our 27th. Today is our 27th session at Fridays with Running, wherein we invited 22 cancer specialists to share their knowledge, experience, expertise, and everything. And another very important milestone which we have achieved is, last week I was at the office of Indian Cancer Society, Delhi, and I met the entire team. I would say the army of Indian Cancer Society, Delhi, and the best part is my LinkedIn post. My LinkedIn post is, shared as a blog by Pongo Daily. There have been over 40,000 followers across the world. So these are two milestones we have achieved at Indian Cancer Society, and this would have never been possible without the splendid support of Indian Cancer Society, Jyotaji,
Priya Parmar, and Priya Tiwari, Vaishali, Ritika, and Mrs. Prasad, and of course our CEO, Kanal Saab, and everyone. So these are the two things I wanted to share with you. And yes, also one more post is due tomorrow. I will share the LinkedIn link tomorrow. I want to get it. So thank you very much for everyone for joining us today. And today we are having commendable survivors. One is Mr. Jatin Cohen, is from Delhi, and then another gentleman is Nishant Doshi, and his wife Ankita, and one more gentleman is joining in another 10 minutes. So, Jajin bhai, please unmute yourself, and I will share your journey. आपको हिंदी में बोलना, हिंदी हो बात करे, इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश में बात करे, जैसा आपको ठीक लगे। आपको 10 मिनट 10 मिनट के लिए आप आराम से बोल सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मैं जब 4 साल का था सब, सर मुझे जब कैंसर हुआ था, ट्रीट हुआ था। और सर मेरे को एक्चुअली जब मेरे को ट्रीट हुआ तो था उस समय तो सर कुछ पता नहीं था रे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। क्योंकि सर उस टाइम तो ऐसा होता है ना कि एक हुआ बना होता है दिमाग में कि ये बीमारी कैसे होगी। मगर जब सर मेरे को आज हर ट्रीटमेंट कुछ सही तरीके से नहीं हो पाया, तो फिर मुझे राजीव गांधी रोहिणी में शिफ्ट कर दिया गया। मैं इमरजेंसी में शिफ्ट हो गया था। और मेरी जो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वो उस बाहर थी। तो मैंने आई थिंक आपके नेटवर्क में इश्यू आ रहा है। की फ्लैट सीधा आई, मेरे को नहीं आई। मतलब डैशबोर्ड को पूरे खाना वो के लिए अपने लिए को नहीं। हेलो, आई एम ऑडिबल। यू आर हेलो, ऑडिबल, पर आपके नेटवर्क में एम आई इश्यू आ रहा ऑडिबल। है। यस। हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल मैम। यस जतिन, यू आर ऑडिबल, बट यू अब कहीं और जाके बात कर लो हेलो। क्योंकि आपके नेटवर्क में इश्यू आ रहा है। ओके ओके मैम, ओके। ठीक है, ठीक है। तो मैम जब मैम अब आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी। हेलो। यस यस जतिन बोलो। ठीक है। तो मैम जब मेरे को यहाँ गांधी में शिफ्ट किया गया तो इस डॉक्टर गौरी कपूर में उनका फेस देखकर मेरे को ऐसा लगा कि मैं अब ठीक हो सकता हूँ। और धीरे धीरे जैसे कीमोथेरेपी वगैरह रेडिएशन वगैरह होती रही। अब मेरे को तो ऐसे एक्चुअली याद नहीं, क्योंकि जब मैं 4 साल का था तब था मुझे। मगर मेरे को ये याद है कि मेरे को जब कीमोथेरेपी होती थी या कुछ इंजेक्शन वगैरह लगते थे, तो जैसे ही डॉक्टर राउंड पे आती थी तो कहती थी नहीं जतिन तुम ठीक हो जाओगे। तो मेरे को आता था कि अंदर से मोटिवेशन आती थी कि डॉक्टर ने बोला तो ठीक होना है। तो अब मैं मतलब बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मैं काफी सारी एनजीओस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कैन हील हो गई, यूवी कैन हो गई। यूवी कैन में भी मेरी स्टोरी पब्लिश हुई है। और मैंने राजीव गांधी हॉस्पिटल में भी मेरा भी ब्रॉडकास्ट हुआ था, उसमें भी मेरी कैंसर जर्नी पब्लिश हुई है। और मैं एवरी मंडे एज अ मोटिवेशन राजीव गांधी हॉस्पिटल जाता हूँ इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से, ताकि जो मतलब जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं उनको मोटिवेशन मिले और वो ठीक हो सके। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कैंसर कैन नॉट स्मैच माई लाइफ, रेदर गिव मी अ न्यू लाइफ। मतलब कैंसर मेरी जिंदगी ले नहीं सकता, ये मेरे को एक नई जिंदगी दे सकता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें डॉक्टर की ही बात सुननी चाहिए। हमें गूगल पे इधर उधर
की बात पे नहीं विश्वास करना चाहिए। जो डॉक्टर ने कह दिया प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए हमें। इधर उधर की जैसे झोला छाप डॉक्टर हो गए इनकी बात नहीं सुनी चाहिए। हमें जो प्रॉपर डॉक्टर ने कहा है एडवाइस उसकी गाइडेंस में ही अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। बाय द वे जजेस, अभी आपकी एज क्या है? आपको यार सर कितने साल? मेरी सर 28। 20, 28? अरे वाह, बहुत बढ़िया। 24 साल हो गया। चलो, आपको बहुत बहुत मुबारक। यस सर। और ये 24 का 48 हो जाए, ऐसे ही हमारे सब लोगों से थैंक यू सर, थैंक good यू। wishes. Now, Jatin, I would like you to unmute and ladies and gentlemen, I would like to introduce Mr. Nishan Doji. Is from Ahmedabad. He's a fellow CNRX on other vocal cord cancer survivor, and he underwent surgery in the last year, few months back. And I'm having privilege rather of inviting him today to share his journey. Vision by over to you, and Ankita, his wife, is accompanying him through daily routine. Thank you. Thank you, sir. मेरा आवाज आ रहा है बराबर? ओके। गुड इवनिंग ऑल। मैं थैंक यू सर। एक्चुअली 2022 में जून मंथ में मुझे पहली बार डिटेक्ट हुआ वोकल कॉर्ड कैंसर इन 2022। उस टाइम मेरे फादर को बाईपास करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। तभी मुझे प्रॉब्लम लग रहा था मेरी आवाज़ में। मेरी आवाज़ घड़ी घड़ी एकदम बैठ रही थी। मैंने तभी सोचा कि अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ तो एक बार डॉक्टर को दिखाता हूँ कि मेरा आवाज़ क्यों घड़ी घड़ी बैठ रहा है, आवाज़ क्यों जा रही है मेरी। मैं डॉक्टर को मिला। डॉक्टर ने मुझे तुरंत एंडोस्कोपी करने के लिए बोला। मैंने उसी टाइम एंडोस्कोपी करवाया और एंडोस्कोपी में डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको वोकल कॉर्ड के ऊपर चांदी मतलब एक पैच की तरह है जो आपको तुरंत ईएनटी सर्जन के पास जाकर एक बार चेक करवाना चाहिए। दूसरे दिन में ईएनटी सर्जन को मिला और उन्होंने मुझे बताया कि आपको इसका बायोप्सी करवाना पड़ेगा। ये डाउट है कि कैंसर हो सकता है। तब मैं बहुत घबरा गया था जब पहली बार सुना तब कि मुझे कैंसर हो सकता है। मैं एडमिट हुआ बायोप्सी के लिए। बायोप्सी करवाया, रिपोर्ट आया। मैं बहुत डर गया था। फिर जब डॉक्टर से मिला उन्होंने बोला ये 100% क्योरेबल है, आप कुछ घबराओ मत। फिर मैं रेडियोलॉजिस्ट के पास गया। उन्होंने बोला कि आपको 100% क्योर हो जाएगा, 32 सेशन रेडिएशन लेना पड़ेगा। मैंने 2 साल पहले रेडिएशन किए, मैं एकदम बराबर हो गया था। फिर अभी लास्ट जुलाई 2024 में मुझे फिर से प्रॉब्लम चालू हुआ। मेरा आवाज़ आ रहा था। मैं फिर से उसी डॉक्टर के पास कंसल्ट किया। उन्होंने फिर से मुझे एंडोस्कोपी करवाया और मुझे बताया फिर से कि आपको फिर से कैंसर हुआ है, ऐसा लग रहा है, तो आप फिर से एक बार बायोप्सी करवाइए। मैंने फिर से बायोप्सी करवाया और इस बार भी पॉजिटिव आया।
उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इस बार आपका पूरा वोकल बोर्ड रिमूव करना पड़ेगा। मैं बहुत नर्वस हो गया पहली बार, पर 2-3 ओपिनियन लिए मुंबई गया, टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई, वहाँ भी जाके आया। वहाँ मुझे बोला, वहाँ से भी मुझे बोला कि आपका फुल वोकल बोर्ड रिमूव करना पड़ेगा। फिर मैं सैनिक सर से मिला, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि यही करो, आप फुल वोकल बोर्ड रिमूव करवाओ, कुछ नहीं होगा, सब बराबर हो जाएगा। फिर मैंने सितंबर मंथ में सर्जरी करवाया। मुझे कोई कीमो नहीं लेना पड़ा और कोई दवा भी नहीं ली मेरी। मैं 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट था और फिर एकदम बराबर होके घर पे आ गया और अभी मेरा एकदम नॉर्मल लाइफ में जैसे मैं रहता वैसे नॉर्मल लाइफ में सेट हो गया। इसमें मेरी वाइफ और मेरे फैमिली मेंबर्स, डॉक्टर्स, डॉक्टर डॉक्टर गुरबेन, डॉक्टर अवधूत सर, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और अभी एकदम नॉर्मल लाइफ फिर से जी रहा हूँ मैं। थैंक यू मुझे इतना सुनने के लिए। थैंक यू। Congratulations, Richard White, and Thank you. I admire the support given by your wife, Ankita Doji. Ankita Ji, I mean, if you would like to share something, I mean, as a caregiver, we would love to listen to everything. I mean, you have experienced last 3 more months, so please go on and share your journey. I mean, see, there are too many individuals here from ICS and throughout India. So we would love to listen to your experiences as a caregiver so that people can get motivated. थैंक यू सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली जब निशान का फर्स्ट टाइम कैंसर डिटेक्ट हुआ तो एक्चुअली घर की सिचुएशन ऐसी थी कि पापा हॉस्पिटल में बाईपास के लिए एडमिट थे। तो पहले तो हमने ऐसा था कि किसी को बताया नहीं, तब फैमिली में किसी को नहीं पता था क्योंकि अ, जिसके पास हमने रेडिएशन लिए उन्होंने हमें बताया कि कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा, रेडिएशन बहुत ईज़ी है, जैसे अपने रोज़ फिजियो में जाते हैं वापस आते हैं। तो वो जर्नी तो इतनी ईज़ी हो गई कि हमें पता ही नहीं चला कि हम इस दौर से गुजरे। लेकिन जब 24 में फिर से डिटेक्ट हुआ और जब पता चला कि अभी तो पूरा ही वोकल कॉर्ड निकालना ही पड़ेगा, तब थोड़े डर गए थे। फिर 2-3 ओपिनियन लिए, टाटा मेमोरियल में भी गए हम। लेकिन मुझे लगता है कि सर शायद हम वहीं से इंस्पायर हुए, टाटा मेमोरियल में जब गए, वहाँ पे जो पेशेंट्स हमने देखे, तो हमें लगा कि इन सब से तो हमारी हालत काफ़ी बेहतर है। और मुझे लगा कि हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, सैनिक सर, आपका भी मैं नाम लेती हूँ क्योंकि आपसे भी हमारी बात हुई थी वो टाइम पे, तो आपने भी काफ़ी इंस्पायर किया। तो मुझे लगा कि बस एक डर निकल गया हमारे डर से कि 2-3 डॉक्टर ने सेम बोला कि क्योर हो सकते हैं। हाँ, और पूर्वी बहन से मिलके तो लगा कि अभी कर जाएंगे ये सब। तो वहाँ पे जो देखा ना सर, तो हमें लगा कि हम काफ़ी लकी है कि हमारे पास अच्छा इंश्योरेंस है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, इतने अच्छे डॉक्टर्स हमें मिले हैं। तो और काफ़ी अर्ली स्टेज में हमें पता चल गया था। तो वो भी एक बेनिफिट था कि पीछे की ट्रीटमेंट में कीमो, रेडिएशन वो सब नहीं आया। तो थोड़ा ट्रीटमेंट हार्ड था, 2 महीने काफ़ी मतलब हमने किया, लेकिन अभी एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं। बाकी
मुझे लग रहा है कि जो लोग सुन रहे हैं उनको मुझे बताना है कि कैंसर से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस जैसा नितिन सर ने भी बताया कि जतिन सर ने उन्होंने बताया कि डॉक्टर की ही बात सुननी चाहिए। ये होम्योपैथिक, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक, उन सब में बिलीव करने से पहले कि अपने डॉक्टर की सुननी चाहिए। थैंक यू सर। Shrenik bhai, am I allowed to speak? अरे बिल्कुल, I mean, you are rather, you never need permission, please go on. I just want to applaud this couple. थैंक यू। मैंने देखा अंकिता को, नितेश है ना आपका नाम? निशांत। निशांत भाई के कंधे पे हाथ रख, and that calmed him down immediately. I was very touched by that. थैंक यू मैम। केयरगिवर का रोल बहुत कम अंडरस्टैंडिंग का है, मतलब बाकी लोग जो हैं वो केयरगिवर के तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि केयरगिवर का रोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंकिता, जो आप कर रही हैं उसके लिए मेरा प्रणाम, बहुत अच्छा काम है। और नितेश भाई, your निशांत भाई, I'm sorry, I'm getting senior moments. आपका सर्जरी, आपके ट्रीटमेंट बहुत रीसेंट है, and I think that you are very brave to come on a show and talk about your experience. मैं देख रही हूँ आपके गले में क्या पट्टी बांधी है, क्या है ये? कॉलर है या पट्टी है? पट्टी बांधी है। So it is a Shrenik bhai, you're muted. Shrenik bhai, you're muted. As a woman born cancer survivor, by default, we all are having a tracheostomy. The tracheostomy is हमारा जो nose है, हमारा जो nose है, वो nose is simply a $1 million ornament. We can no more breathe from nose. We all are having a hole in the middle of the neck or in the middle of the throat. So just to protect that stomach, that's to protect the whole, is wearing such kind of belt, and I'm covering my stomach with this scarf. So that is the reason he's wearing a belt, and this is permanent requirement, permanent stoma for vocal cord cancer survivor. Thank you very much for explaining. And thank you both very much for coming on the show. I think that it seems to me that we have to build up support groups for each of these cancers. With you all, I think अभी श्रेनिक भाई 1 से 2 तो हो ही गए हमारे शो पे, और ये 2 का 4 और 8 और 12 करते जाइए। बहुत लोग हैं वहाँ जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं, जो डरते हैं, और आपसे मिल के बहुत उनका हौसला बढ़ेगा। बिल्कुल। बोलिए निशांत भाई, बोलिए। एक्चुअली मैं पहले इस जगह पर आ गया था क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल है। मैं महीने में 20 दिन घर से बाहर रहता हूँ, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ अहमदाबाद। मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ता था। मैं मेरी सर्जरी के 2 महीने बाद मैं अपना काम फिर से वही तरह कर रहा हूँ। आज भी मैं महीने में 20 दिन घर से बाहर रहता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं अपना काम
सही कर रहा हूँ। तो जो भी मतलब अ, सुन रहे या सुनने वाले, मैं उनसे वही बोल रहा हूँ कि आप मत घबराओ, जो भी आपके डॉक्टर बोल रहे हैं वो करो, और आप अपनी जिंदगी पहले की तरह ही जी पाओगे। 100% आप अपना सब काम कर पाओगे। कोई मत घबराओ प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आप एक ग्रुप बना लीजिए जो बात करते रहे विद ईच अदर, सो दैट एक या दूसरे का आप हौसला बढ़। बिल्कुल 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 यस मैडम, we will do it, and we simply need your blessings, and we are good to go. And Chundaji, as you rightly said, I do mention in each of my conversation, in each of my talk, that the life of any survivor is incomplete without caregivers, because caregivers, they are your backbone, and and they are giving so much of care, and that too without no expectation. So I admire, and I would rather love to dedicate today's session to all caregivers across the globe. Thank you, Absolutely, thank you. absolutely. Can I also have a word with Jatin, please? Yes, In भाई जतिन क्या? भाई, जतिन भाई अनम्यूट करो आप। जतिन, वो शायद कहीं बाहर गए हैं। कोई नहीं. I just wanted to say that Jatin talked about Dr. Gauri, who is the pediatrician in Rajiv Gandhi Cancer Institute in Delhi. Neither she is. यस मैम, यस मैम। कहाँ हो भाई? मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको. हाँ जी मैम। uh, हाँ, हाँ जी जतिन मैम, सुन रहा हूँ मैं। मैं क्या सुन तो पा रही हूँ. तो Jatin, Dr. Gauri has looked after so many children. So many of them are यस मैम, यस। टुडे, और उनके हाथ जिस पे है वो बिल्कुल ठीक होना ही है. Oh, she's a wonderful doctor, and I really think that we should all applaud people like her. I mean, she's not the only pediatrician who यस does मैम। fantastic work, लेकिन जो pediatricians courage देते हैं, सिर्फ पेशेंट्स को नहीं लेकिन उनके माँ बाप को भी, है ना जतिन? आपके माँ बाप थे साथ में? यस मैम, यस मैम। तो जब आप, मैम, माय ओनली मोटिवेशन इज डॉक्टर गौरी कपूर मैम। yes, so when you go there, you tell her that यस Mrs. मैम। Govil has sent very warm regards to her, and I thank her from the bottom of my heart. I, ओके मैम। I've known her for about, I यस think, मैम, 30 years, and I can't stop talking about her. यस मैम। Thank you. Hanji. थैंक यू। madam, madam, on this note, let's invite Dr. Gauri in the coming months. Yes, we should. There are two wonderful ladies in Delhi, both pediatricians. एक Dr. Gauri in Rajiv Gandhi and एक Dr. Rachna Seth from AIMS. They are both on par with each other, both big-hearted, gentle people who work miracles. Very nice, very nice. We will invite both of them on this session one by one. I mean, it would be rather a privilege, that they come on our show and share their expertise, skills, and experiences. Uh, so yes, Arijika, वो आपके क्या नाम था, वो थर्ड सर्वाइवर आ गया है क्या? No, sir, because of some technical difficulties, he's not able to join this session. Fine, fine. Anyone from the audience would like to ask any question or would like to share any of your experiences, etc. Please, please raise your hand and unmute, and we would love to listen to you.
Uh, I'd like to call on Dr. Santosh Sahi. yeah. Santosh, can you please come on board? Unmute yourself and let's see you. Are you there? I see your name. Maybe Jotani Pajanam said, Sanjay is joining. We have KD Malhotra, she's there. Yeah, She was Sangeeta hosting. Malhotra, very good person to call on. Quite right. Sangeeta? Aajao. I'm here. I had guests actually. So Good evening, ma'am. Do you know Sangeeta, Jatin? Yes. No, ma'am. No, I think I've seen her, seen ma'am somewhere. You can't forget her if you've seen her once. Okay. She is Ma'am, one. I think I've seen somewhere. आप हमारे सर्वाइवर्स डे में आते हो ना? No, Sangeeta, Yes, Mrs. Gover. tell them about your experience of counseling and of forming support groups. I go to the Delhi State and BLK hospital. I'll just go to a quieter place. Well, I had guests, so they just left. 1 minute, please give me a minute, please. Yes. And I work in these two hospitals, and we meet a lot of patients who feel very happy with us talking to them. And exactly what do you want me to say, Mrs. Govil? There are two such different atmospheres. The Delhi State Cancer Institute Yes. has got really the poorest of the poor, poor. There. And the other hospital, BHPur, is for the middle class and the upper middle class and the rich. So And is there a difference in the yes, counseling yes, you Mrs. do? Govil, there's a lot of difference. Yeah, so talk about it. So see, when we go to the Delhi State, it's mostly information because they really don't know what to do once they're detected with cancer. Like today also, I had gone today also. So the new patients, I've spoken to the new patients. So they were really happy because they didn't know what was going to happen to them. They were very scared. They didn't know anything about the treatment. There were a lot of myths they had to deal with. One was that it is contagious. Yes. And the other is, like very small things, but it does affect them a lot. Like milk, white, you can't have anything white. And, nobody can go near them. So, it's like talking to them and they feel very relieved after I talk to them and tell them, like, you don't have to worry about these kind of things. And the whole family should be this. I always specify on the whole family being together at a time like this. So you've seen Ankita with Mr. Doshi, and you've seen the comfort she provides as a caregiver, right? Yes. And in BLK, it takes me a little time for a patient to open up. Because they are more educated, they read a lot, they go on the net, so they already know a lot. But once you make them comfortable, I've seen they open and they want to talk. They talk more, it's more of listening in BLK because they want to once they know, once they connect with me, they want to talk. And they feel very relieved after talking. I'll just give you one example, Mrs. Gobil. Last time I saw a patient who was getting hysterical because she was being admitted. And she was very serious, very sick, in a lot of pain. I think she was in a third, fourth stage. And she was very upset about the whole thing. So I skipped. I thought she needed professional help. She needed a psychologist from the hospital. So I left her and I went to the next patient. The husband came running after me. He says, "Ma'am, why didn't you come to us?" So then I realized I had spoken to them before. So he says, because last time also you had calmed her. And I think today also you can only talk to her. And thankfully, she did calm down after I spoke to her. So in BLK, it's a lot of emotional thing where it's a lot of listening.
and just, telling them like you can talk your heart, because they don't have anybody to talk to sometimes. It's information as well as listening to them. And Delhi State, Mrs. Govind, they are very grateful for whatever information you give them. They need a lot of emotional support also, because there are some families who kind of, don't treat them well and look after them. So there is a difference between the two hospitals. Fantastic. I mean, I truly admire all your energy, enthusiasm, in extending support to the cancer patients, the survivors, and especially to caregivers. So, saluting your dedication. Nee, we salute you. You're doing so much in spreading awareness. I try not to miss your program, but it's sometimes I have guests. No, absolutely. I mean, in any case, we are live streaming on YouTube, Yes. and you can see anyone at the later stage. Thank you so very much for sharing your experiences. Jyotaji, I mean, can you ask Dr. Santosh? I mean, I don't know where she disappeared. wait. Saki. But never mind, we've got Satinder here. Yeah. Satinder, आज कौन से मेट्रो स्टेशन के स्टेप्स पे बैठी हो? Last time when you spoke to her, she had got off a train and sat on the steps in the metro station and spoke to Shrenik. Are you there? सतिंदर मैम आप म्यूट पे हैं. हेलो, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग मैम. हाँ, नहीं आज मैं घर पर ही हूँ. अब मैं अपने हस्बैंड की अभी केयर टेकर हूँ. अभी तो मैं वहीं पर ही हूँ. अभी मेरे हस्बैंड को थोड़ा अटैक आया था जी, तो उनको अभी 3 स्टंट डले हैं लास्ट वीक. तो अभी वो रेस्ट पर हैं, तो मैं उन्हीं के साथ हूँ अभी ना. तो मैं ये याद दिलाना चाह रही थी सब कैंसर पेशेंट सर्वाइवर्स को, आप अपने हस्बैंड्स, अपने वाइफ्स को उनके कंधे पे लीन करते हैं, बहुत डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी ये याद भी मिलता है कि उनको भी आपकी जरूरत है, आप उनको सपोर्ट करेंगे. बिल्कुल मैम, सही बात है. हाँ, अब बोलिए आपका क्या एक्सपीरियंस था? किसका? डबल मैस्टेक्टमी. यस मैम. संगीत डबल मैस्टेक्टमी था मेरा, लेकिन उस टाइम जो था, उस टाइम की सोच और आज की सोच में, या उस टाइम की ट्रीटमेंट में और आज की ट्रीटमेंट में बहुत फर्क है. अगर हम उस टाइम से देखें तो उस टाइम शायद ट्रीटमेंट भी इतना अच्छा नहीं था. और अब जो कीमो वगैरह होती है उसमें तो पहले ही इतना इंजेक्शंस वगैरह डाल देते हैं. नहीं तो हम लोगों के टाइम में इतनी वॉमिट्स आती थी, इतना सब होता था ना कि बहुत ज्यादा परेशानी थी. लेकिन सचमुच में मेरे हस्बैंड ने बहुत बहुत मुझे संभाला. वो मैं जो देखी बेचारे साल वो पेन लेके खड़े रहते थे कि मैं इतनी वॉमिट करती थी, इतनी वॉमिट होती थी, और वो पेन लेके खड़े रहते थे मेरे बेड के पास कि भाई तुम कोई बात, तुम घबराओ मत. और मैं कहती थी तुम पीछे हो जाओ, तुम्हें स्मेल आएगी. वो कहते थे नहीं तुम घबराओ मत, मैं कर लूंगा. और बहुत सी बातें. एक इंसिडेंट था कि मेरी सिस्टर भी बैठी थी पास में जब मेरी कीमो चल रही थी. मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर दोनों थे, तो वो पाठ कर रही थी. उसने आधी पाठ हुआ होगा, और जो कीमो वाली बॉटल थी एकदम ब्लास्ट हुई और सारा फट गया. वो कीमो सारा का सारा अपने आप ही ऑटोमेटिक, रात के 11 साढ़े 11 का टाइम होगा, तो पूरा वो ब्लास्ट हुआ. तो सभी एकदम से शॉक्ड हो गए कि ये क्या. मैंने कहा ये भगवान जी की कृपा हुई है कि चलो जो भी है लाइफ बची है तुम्हारी, ये कीमो खत्म हो गई यहीं पर ही. लेकिन उसके बाद भी काफी सारी परेशानियां आती हैं, जैसे हेयर लॉस वगैरह भी होता है. तो भी लोग जो है, एक आपका ये एक ऐसा पार्ट है ना हमारी लाइफ का कि जिससे निकलना सचमुच में बहुत मुश्किल है. और इसमें हमारा लाइफ पार्टनर ही हमारी हेल्प कर सकता है, या हमारे फैमिली मेंबर्स ही हमारी हेल्प कर सकते हैं. बहुत सी चीजें ऐसी हैं. And I want to say, Shrenik bhai, when somebody is very sick, उनको पाठ सुनाया जाता है, भजन सुनाए जाते हैं, सारे
भगवान के कीर्तन सुनाए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्यादा मस्ती वाले गाने सुनने चाहिए and get back to normal listening of what you are doing. I mean, बिल्कुल आप इतने बिल्कुल जल्दी भगवान के प्यारे नहीं होते हैं. तो आपकी बात मैम बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब एक दुख होता है और इस दुख को सब इतना ज्यादा मानते हैं कि उस टाइम में भगवान की ही याद आती है। ठीक है, भगवान की याद आने में कौन सी दिक्कत है. आपने देखा वो कबीर का प्रोग्राम जो हुआ जी था, जी। वो भी भगवान के ही बात कर रहे थे, लेकिन नाच गा के याद कर लिया. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, सो डोंट कन्फाइन योरसेल्व्स. इतना ही मैं कह रही हूँ, डोंट कन्फाइन योरसेल्व्स टू रोना धोना. ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फन, गो आउट, एंजॉय योरसेल्व्स. यस मैम। या यस यस, बिल्कुल यू आर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट मैम। थैंक यू। या और कौन बोलना, आई मीन, और इसको बात करनी है, प्रिया परमार, आई मीन, अनुमा, अनुमा, यू वांट यस टू सर। शेयर योर जर्नी, प्लीज गो ऑन। सर जर्नी तो नहीं, मैं अभी जो ज्योत्सना मैम लास्ट मिनट में बात बोल रही थी कि अच्छा हैप्पीली म्यूजिक प्ले होना चाहिए रादर देन भजन्स, तो आई एग्री विद हर। मतलब ऑल दोस टाइम पे भजन बड़े सूदिंग लग रहे होते हैं, बट क्या होता है कि जब जैसे कि आप एक वो माहौल में होते हो, एवरीबडी टेंस्ड, आपकी फैमिली टेंस्ड है, तो वो भगवान को ही याद कर रहे होते हैं कि बस कुछ मिरेकल हो जाए और किसी तरह ये ठीक हो जाए। बट क्या होता है कि वो एक फेज चलता रहता है ड्यूरिंग रिकवरी ऑल्सो, क्योंकि आप एक एनवायरनमेंट में क्लोज्ड में रहते हो। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया जब मैं आईसीएस गई, तो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो जो एनर्जी थी वो लॉस हो गई थी कहीं ना कहीं, टू हैव फन टू एंजॉय, मतलब यू डोंट फील लाइक, क्योंकि आप उसी माहौल में थे पूरा टाइम। बट हाँ, जब मैं आईसीएस गई तो एक अलग कॉन्फिडेंस आया सबको देख के कि भाई ये माई एज इज जस्ट हाफ ऑफ दीज पीपल एंड दे आर enjoying a lot, they are living their life to fullest and मतलब they are not leaving any moment to get up, dress up, to do anything। और मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ कि इट्स ओवर नाउ, बस ठीक है जो चल रहा है चले दो। तो आई गेस दीज टॉक्स, दीज ग्रुप्स, दीज कम्युनिटीज, हमारा एनजीओ, ये सब बहुत वैल्यूएबल हैं फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो, टू अपलिफ्ट, टू कम बैक टू देयर नॉर्मल सेल्व्स। हम्म. एंड जर्नी तो आई गेस सबकी समराइज कहीं ना कहीं, सब हम लोग एक दो जगह कॉमन मिल ही जाते हैं कि हाँ, कभी हार्ट ब्रेक हुआ, कभी बहुत टफ लगा ट्रीटमेंट, कभी फैमिली की वजह से बहुत इजी भी हुआ। तो इट्स सेम फॉर मी ऑल्सो, इट वाज अ रोलर कोस्टर एंड इट स्टिल इज, बट हाँ अच्छा चल रहा है, टच वुड। ग्रेट अनुभा ग्रेट, यू आर थैंक यू। राइट। मैंने भी आईसीएस ज्वाइन किया जब से, उसके बाद भी मुझे भी लगा कि अब लाइफ जो है ना, अब लाइफ जीना है, अब हमें पंख मिले हैं, अब हमें उड़ान भरनी है। क्योंकि यस। उससे पहले सचमुच में हम लोग भी सोच रहे थे कि हाँ ये बस अब कुछ ही टाइम है, अब ये खत्म ही है। जबकि अब मेरे को काफी टाइम हो गया है। अगर मेरी फर्स्ट कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें तो 25 ईयर्स अगो। तो इस बार जो मैक्स वालों ने सिल्वर जुबली बनाई थी मेरे, दैट्स कमेंडेबल मैम। Yeah, really good. उन्होंने, यस, उन्होंने शाल दिया, मुझे शॉल दिया और एक वो और लेटर दिया बड़ा बढ़िया सा, और कहते जी ब्यूटीफुल। आपकी सिल्वर जुबली होगी। मैं कह जी बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं सचिंदर जी, जब जब गोल्डन गोल्डन जुबली आए तो आपको ना, आप सबको पार्टी देनी पड़ी। श्योर श्योर सर यस श्योर। डेफिनेटली, ये ग्रैंड कोई पार्टी। पीछे नहीं हटती है पार्टी देने में. ये आते हैं ऑफिस में तो हमें भी नचाते हैं. बहुत बढ़िया। बाय एक द वे, मिनट में, I'll just open the door and come back. या, आई मीन, Priya Parmar, please unmute and share your Yeah, yeah. experience. I am not going to share any journey because I haven't walked this path yet. However, You what I are wanted to know was the importance of having a financial cover during the time of treatment. Have all of you all had health insurance? कैन आई yeah, आंसर? Yeah, but you know it's not
not adequate. I mean, as of during the current situation, it's not adequate. Can I just say something? Yeah. See, when I talk to the patients in the hospitals, sometimes more than the emotional support or the information, they are worried about the finances. Because they say कि ये सब तो ठीक है, but we need money to get our treatment done. And I've seen it's the middle class patients who suffer the most because the insurances are not very big, so they run out of money, and nobody is ready to help them. And their status is such they feel very embarrassed to ask for money. So they are the ones who suffer the most. The poor, everybody still goes out of the way to help them. But the lower middle class or even middle class who run out of their resources are the ones who face a very tough time. And nobody, because because there you have to have a certain amount of income to get aid. So since their income is more than that, they don't get help from anyone. So that was the reason why I also started, trying to help them in my own way. And in the last stage, they had a few chemos left. The doctor started doing, not taking consultancy. If I managed to get little money for the last few chemos. So that is the time, I've noticed, they have a very tough time with finances. So, and nobody wants to, have a big insurance, but they think nothing is going to happen to them. Nobody plans. They realize it very late sometimes that. Nobody plans for illness. Yes, illness, yes, Mrs. They Gogol. save for their children's wedding, for their children's Yes. education, for their retirement. But who plans for ill health? And Mrs. Gogol, when we talk to them, they think it's very negative. Bhai, humne ye baatein nahi sunni. Like it's like that,